हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कल घूम के आके फिर शाम को रेस्ट जब लिया तो रेस्ट लेते लेते सो ही गया, जैसा होता है हमेशा फर्स्ट डे। तो हो गया था एकदम, रात को ही उठा, फिर डिनर करके फिर सोया, तभी सुबह उठा। वैसे जो आज का प्लान है, अभी ब्रेकफास्ट करके देन वी गोना गो टू द दमनियात आइलैंड, जो यहाँ का मोस्ट पॉपुलर सीनिक ब्यूटी है, जहाँ पे फुल्ली वो टार्कवाइज ब्लू वाटर एंड अब वही दिखता है। बीच एक्सेस आई थिंक में ही मिलेगा, अक्टूबर एंड तक वो टर्टल का शेल्टिंग पीरियड होता है। तो लेट्स सी क्या क्या देखने को मिलता है उधर। You all are set to go now for the Damaniyat Island. अभी ट्रैक करके जाना है अलमौज मेरीना, वहाँ पे हमारा है ब्लू वेव ओमान से टूर बुक किया हुआ है। जाके फिर वो फॉर्मेलिटीज है कुछ, देन विल गो टू द दमनियत आइलैंड। पहुंच गए हैं अलमौज मेरीना। ये जो मेरे पीछे शेड दिख रहा है ना पार्किंग वाला, ये है पेड पार्किंग, और इसके पीछे खाली जगह है वो है फ्री पार्किंग। तो हमने तो फ्री पार्किंग में पार्क किया। अभी मैप देख के उसको ऑफिस पे जा रहे हैं, जहाँ से हमें गैदर करना है और बोट लेके फिर जाना है हमको दमनियत आइलैंड। इधर ही दिखा रहा है। इसमें से कोई भी हमारा बोट हो सकता है, वो सामने वाला है। तो बोट पे बैठ चुके हैं अभी। The weather today is good, though we have some swells, so the trip will be with little bumpiness. So for those sitting in front, please be aware, bumpiness in the front side is much than in the behind side. Okay? In Damaniyat we'll have only one kind of activity, and that is snorkeling. With that being said, please keep in mind the beach is out of bounds. You are not allowed to step on the beach unless in case of an emergency. You're having a muscle pool, maybe you're drowning, it's okay, you can go to the beach. Otherwise, please avoid stepping onto the beach. The main reason why the beach is closed is the breeding season for the turtles. The turtles and the birds, this is the breeding season, so the beach is closed. इधर आओ, टर्टल टर्टल टर्टल, वो जो टर्टल बोलते हैं। डैड एंड डॉटर सनग्लास पहन के एकदम तैयार बैठे, स्नॉर्कलिंग करने जा रहे हैं हम। ये अलमौज मेरीना।
This turtle city. Okay. Turtle city, just from the word, is the city for the turtles. You are likely to find a group of turtles feeding together, maybe 5 to 10 to 15 turtles. We have two simple rules. Rule number 1, the beach is out of bounds. Please do not step on the beach unless on an emergency. Rule number 2, the turtles are super friendly, very friendly. You can swim with them, take videos, take pictures, but please do not attempt to touch or grab the turtle. It's not allowed. If you are fined, you're a tourist, they'll have 300 real fine on your passport. If you're local, on your card. It's not allowed to touch the turtles, okay? So we'll be here for the next 1 hour from 9:40. So I've given you 10 minutes to dress. Ui, bốn lên này. Baby, give me. You want? Baby? You want to swim? You want to swim? Like, yeah. I'm all set. बस ये डालना है फिर पानी पे जाना है. Look at the sea, man. धूप बहुत है, गर्मी बहुत है इधर. Okay, if you're ready. It's like that? So the mask, it blocks the face and the nose. You use the snorkel to breathe.